This going can't. to be, किसी को पता है आज क्या हमारा एजेंडा होगा? यस Bohr's अमोदनी, देवांशी, बोहर्स थ्योरी, Bohr's राइट? Bohr's atomic हाँ, theory. बोहर, great. And how you people are going to do it? You will be learning, brother, everything new, everything new. And the best way is practice it. No rote learning at all. Rote learning पता है ना क्या? कोई रिलेशन याद नहीं करना है. I'll be repeating in 20 times. अच्छा, कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, क्या आप लोगों ने वो शुरू कर दिए? Yes, sir. और वो सीक्वेंस में नहीं है बच्चों, Yes, sir. मैंने सिलेक्ट किए हैं ना, तो वो सीक्वेंस में नहीं है, तो उसकी सीक्वेंस मत देखिएगा. और कल तक आपका टारगेट है, कल आपको उसके हिंट्स शेयर हो जाएंगे एंड यू हैव टू सॉल्व इट. आफ्टर दैट वेडनेसडे को मैं आपको बोहर्स थ्योरी की असाइनमेंट शेयर करूंगा. बोहर्स, आज तो शायद बोहर्स शायद पूरी ना हो. चलिए बेटे शुरू करते हैं. एंड आई होप एवरीबॉडी हैज सेटल्ड डाउन टिल नाउ. एक मिनट बेटे. So this is going to be just a minute. So, सर एक डाउट था. बोलो. सर ये जो माइक्रोवेव होती हैं सर उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है सर विजिबल लाइट से, तो हाँ सर हाँ, उन्हें एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, हीट करने के लिए उनको माइक्रोवेव्स को. हाँ हाँ यूज करते हैं, मतलब मैं समझा नहीं, क्वेश्चन नहीं समझा. सर जो माइक्रोवेव्स होती है उनकी एनर्जी भी तो कम होगी फिर, क्योंकि उनकी वेवलेंथ ज्यादा है, हाँ हाँ, तो हम उनको यूज क्यों करते हैं? उनसे ज्यादा एनर्जी तो विजिबल लाइट में होती है. इंटेंसिटी का भी तो फर्क होता है ना बेटे. जैसे आप माइक्रोवेव, माइक्रोवेव जो आप अपने उसकी ओवन की बात कर रहे हैं, तो व्हाट हैपेंस, ओवन इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, की फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू कोरिलेट विद द जो पानी का मॉलिक्यूल होता है ना, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है. और वो वाइब्रेट करना शुरू होता है और उसकी वजह से वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. बेसिकली राजा माइक्रोवेव जो होता है उसमें आपके माइक्रोवेव में वाटर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से खाना गर्म होता है. समझा? यस सर. तो दैट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी. ऐसे तो रेडियो वेव्स में भी एनर्जी है, बट अगर उसकी इंटेंसिटी, आपको पता है ना कि इंटेंसिटी और उसमें फर्क होगा. तो अच्छा सुनो, मैं जरा 2 मिनट के लिए आपको म्यूट पे डालने वाला हूँ बेटे, है ना, मेरा कुछ यहाँ पे कुछ कंट्रोल में गड़बड़ है, तो प्लीज वेट फॉर मी, प्लीज वेट फॉर मी.
हेलो बच्चों, यस, आई एम ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वो थोड़ा सा ग्लिच आ रहा था Yes, बेटा। sir. वो ना मेरा एक कंट्रोल जो ड्रॉ का था ना वो गायब हो गया था, तो आई वाज जस्ट सीइंग कि वो कहाँ गया है, तो मिल गया। सो बोहर ने ये कहना था, तो ये तो दिक्कत तो आनी थी, है ना? सो इट कांट हैपन, ये कैसे हो सकता था? चलो, लेट्स स्टार्ट बेटे। सो I'm starting from imagination is more important than knowledge. Don't forget it. Imagine. See, हम लोगों ने एक मॉडल किया था, that is known as Rutherford's atomic model. एक बार मेन पॉइंट्स रिव्यू कर लेते हैं। The Rutherford said that the whole positive charge and the mass is going to be concentrated in the small region called at nucleus. We did it. Not a big issue, है ना? The electrons revolve around the nucleus in circular paths called orbit. You remember, bache? And hence that was known as the planetary model. And electrons and nucleus, the electrons and nucleus are held together by a electrostatic force of attraction between them. That is something parallel to what you said, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के बीच में आपस में उनका रिलेशन आता था। Then came the failures of the Bohr's model. According to Clerk Maxwell, actually he was the, you can say, Bohr's के भी senior थे. Whenever a charged particle move around another oppositely charged body, it must continuously lose energy in the form of electromagnetic radiation. That is, electron must lose energy and ultimately fall into the nucleus. That was Clerk Maxwell said कि when an electron is revolving around the nucleus, क्योंकि electron के ऊपर negative है and proton के ऊपर positive है, so they must constantly attract each other. And what is going to happen? धीरे धीरे करके electron should lose its energy and it must fall into the nucleus. The mathematical calculation show that it must take only -8 seconds for an electron to fall into the nucleus, but it never happens, right? And Rutherford was not able to explain why it never happens, so it was considered to be failures of the Rutherford's model. The more failure of Rutherford came from, he said nothing about distribution and energies of electron in an atom. इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहाँ होगी, इलेक्ट्रॉन विल बी विच शेल में होगा, कितने डिस्टेंस पे होगा, रदरफोर्ड ने इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं दिया था. He could not explain the emission spectrum of hydrogen atom. Now you people know, मैंने याद करने के लिए मना किया था, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्री नाम की कुछ सीरीज निकलनी शुरू, कुछ एनर्जी निकलनी शुरू हो जाती थी एटम्स में. Rutherford had no idea about that. So there came another great scientist, Niels Bohr. He happened to be a great friend of Einstein also. He was born in Copenhagen and he got the Nobel Prize for 1922. Everything we call real is made up of things that cannot be regarded as real. आप जिस साइंस में जाने वाले हैं, he will be the person जिसने क्वांटम मैकेनिक्स को यूज किया. क्वांटम का मतलब क्या था? पैकेट्स बनना. To use, he was that used to explain atom और उससे related phenomena. If quantum mechanics hasn't profoundly shocked you, you haven't understood it yet. So this is going to be a great proverb ਜਿਹੜੀ अभी तक भी जो अभी तक हमारे पास valid है. कुछ ऐसा कहेगा. Try to visualize what is on the screen. एटम की दो व्यू बनाए गए, सेंटर में न्यूक्लियस देख रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट हियर. अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, इट इज गोइंग टू अब्सॉर्ब एनर्जी. नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द एनर्जी इज गोइंग टू बी फॉर्म ऑफ फोटोन पैकेट्स, राइट?
electron is going to absorb energy and it will go away from the nucleus, higher shell बोलेंगे, याद नहीं करना है. This is going to be known as ground state, lowest energy level. सब कुछ define किया जाएगा. And say अगर emission होता, now electron is in the higher energy and when it will come back, energy will be emitted. This is going to result into absorption and emission spectrum. And Mr. Bohr, he will tell us what is going to be the energy, what is going to be the radius, and many other things about electron in the nucleus, right? So we are moving ahead with the theory known as Bohr's theory. Everything I'm writing on the board, right, that has to be copied after the class. But bete, repetition is going to be the key. The more the time you are going to revise it, the more comfortable we are going to be. So there is only one way to go through that, that is revise, repeat, repeat, and repeat. No other formula exists, no other shortcut exists. And I assure you, just follow my instruction. By the end of this week, you will become master of Bohr's theory. Whatever is required, you will know that. Let's start. Bohr said, these are the main points. I have written the form of points. Most of the space in an atom is going to be empty. More than 99.9% space in an atom is going to be empty. You remember 99.99. Jitne marji 9 laga do, it is going to be empty. Nucleus lies in the center and contains protons plus neutron. That was the same point which Mr. Rutherford said. Now he says electron revolve around the nucleus. He is defining fixed circular path called orbits. So he was a person who brought fixed circular path का concept लेके आया. उससे पहले electron can be present anywhere around the nucleus, but he placed a restriction. For example, Anuvansh, unmute कीजिए. एक hypothetically, let it be बेटा एक staircase ले आते हैं. You understand staircase? सीढ़ी. Yes, sir. Right? एक सीढ़ी ले आते हैं और हम इसको ग्राउंड पे, आपके घर की फ्लोर पे जो फर्श है उसके साथ इसको टच करा देते हैं. This is which level, son? The ground level. Ground. Right? Let it be, ये जो केस है, केस आप समझ गए, जो उसने बांस लगाया हुआ है, ये जो मेटल का पीस लगाया हुआ है, that is after every 0.5 मीटर उन्होंने लगाया हुआ है. So this will be at 1 meter, this will be at 1.5 meter, this will be at 2 meter, and so on. Do you understand मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Now imagine, my son, Yes, that you are standing here. You can keep your feet here, right? You can keep your feet here. You can keep your feet here. You can keep your feet here. Can you keep your feet in between the two cases? No. Can you exist in between the two cases? क्या आप वहां पे अपना पैर रख सकते हैं? Strictly no. You understand बेटे, concept समझ पा रहे हैं? Yes, sir. Similarly, we will be drawing atomic structure in the way of half circle. Why? That will make the things easier. This is second orbit, this is third orbit, and this is fourth orbit. This is Bohr is going to introduce, first time orbit introduce karega. He say electron can live in a certain fixed space around the nucleus, and it can be present in certain fixed space. That is, this he saying is fixed. This he saying is fixed. It can be existent, say here, this is going to be fixed, and say this is going to be fixed, and that is going to be known as what? Orbit. What is orbit? Where electron can be present around the nucleus. Now, what is a rule? That electron can be present here, electron cannot be present there, electron cannot be present there. This is which Bohr gave to us. Nobody knew that why electron will be there, when it will be there. So Bohr हमें ये सब कुछ बताने वाले हैं. It is similar to staircase, right sir? देखिए क्या कहते हैं. Do you remember something known as momentum, son?
Yes, What sir. is momentum? Mass into velocity Velocity. are going to be two types. One is going to be the linear momentum. What is linear momentum? I'm throwing a ball towards Straight you. line. Straight line में चल रही. So that is going to be linear momentum, mass into velocity of the object. You understand what is M? Mass. What is V? Velocity. Now Bohr is introducing another term. That is term to exist करती है. He is going to define it. What is that, son? Angular momentum. इसका Momentum. सिंबल होगा कैपिटल L. इसका सिंबल होगा स्मॉल p. This is going to be given by m into v into r. What is r? The radius Radius. of the circle or the sphere in which the atom, I'm sorry, right now electron is going to move. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो अगर हम अर्थ को एक सर्कुलर पाथ में, वैसे है नहीं है, अगर आप एक सर्कुलर पाथ में घूमता हुआ देखें सूरज के आसपास, तो व्हाट इज द रेडियस? जो भी अर्थ का रास्ता है सूरज के आसपास उसको हम क्या बोलने वाले हैं? रेडियस. तो एंगुलर मोमेंटम इज गोइंग टू बी गिवन बाय m. व्हाट इज m बेटे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. राइट here, because we are going to talk about this. Do you remember the value? Yes, son. -1, 9.1 into 10 raised to power minus 31 kgs. or if ever this thing term, you should be able to understand, right? Grams. What is V? The velocity Velocity. of electron. He will define it. What is R, son? Radius of electron. Of the orbit. That is what Bohr is saying. What Bohr is saying about the fixed circular paths. Third point, electron revolve around the nucleus in fixed circular paths called as orbits. Only those orbits are permitted in which angular momentum is whole number multiples of h by 2 pi. What is h? हमारा वही पुराने वाला दोस्त Mr. Planck's Planck's constant. minus 34 joule second. And beta h by 2 pi is also known as h bar. And what is h bar? H by 2 pi. Mr. Bohr is telling us, how he is telling us, that is not our cup of tea. We must enjoy whatever he has said. MVR should be whole number multiple of what? H by 2 pi. For example, see this. I put MVR is equal to NH by 2 pi, where N can be beta. So on. It has to be whole number. This is the packet, this is the quantum of angular momentum. See, wherever the MVR, इसको मैं L बोल देता हूँ, wherever L is going to be H by 2 pi. What is N here? 1. That will be the first home of electron around what? Nucleus. Called what? Orbit. Do you understand? अब where the L is going to be, N की वैल्यू क्या पुट करें दोस्तों? 2 h by 2 pi. You can write it by h by pi. That's the same thing, but we will go as Mr. Bohr is saying. That will be the second home. You understand? Of electron around the nucleus. And what that home will be known as? Second orbit. जिसके लिए n क्या define करेंगे बेटे? हम n is equal to define करेंगे 2. Right? And the point to be understood here, the point to be stressed here is in between n is equal to 1 and n is equal to 2, electron can't live. Either it has to be in this, either it has to be here. It cannot be present in between the two. That is similar to the concept I was sharing, that either you can be here, you can be here, you can be here, but in between the two you cannot live. Imagine that you have a 3-story house. You people can either live in the ground floor or in the first floor. क्या आप in between 1 and 2 में एक rope लगा के जिंदा रह सकते हैं? No. So you can be present here. You cannot be present anywhere except the
well defined orbits, right? Dobara dekho, that is what I'm saying. Now what will be the third home where n will be what beta? 3. And what will be the angular momentum there? 3h by 2 pi. And that will be known as which orbit? The third orbit. And is 4 mein 4h by 2 pi, n is equal to 5 mein it is going to be 5h by 2 pi. Electron can live only there. Please read the fourth point for us. Repetition. What Bohr is saying? Yes, Anuj, you are with me. Please read it. He Only says those orbits are permitted in which angular momentum is whole number multiple of h by 2 pi. h by 2 pi. Please write down this relationship in your rough notebook. Everybody please write it. Just in your notebook. Our way of practicing will be slightly different what others do. Done? Shall I move to the next page, Vacho? Only those orbits will be permitted in which the angular momentum is going to be whole number multiple of h h by by 2 2. pi. Repetition. This is a nucleus. What Bohr is saying. These are going to be various orbits. This is going to be the first orbit. This is going to be the second. This is going to be the third. This is going to be the fourth, the fifth, and so on. If electron is here, then electron ka angular momentum is equal to h by 2 pi. electron ka angular momentum is 2h by 3h 2 by pi. 2 pi, 4h by 5h by 2 pi. Mind it, the difference in angular momentum, delta, is always going to be what? Are you able to get it? h by 2 pi. Is always going to be h by 2 pi. Mind it, this is not a distance. This is the difference in term of angular momentum. That is what Bohr is bringing for us. Like, let it be, many of us live in Chandigarh. From Chandigarh, we have to go to Delhi. It is saying something that you start from Chandigarh, you can stop in between, let it be Panipat only. We cannot stop anywhere except Panipat, and the next stop has to be Delhi only. That is what he said. Is it clear? So he, for the first time, said that electron nucleus के आसपास present हो सकते हैं, रोहित, सिर्फ in fixed circular paths called orbit. He has defined orbit. First time it has come. For your general knowledge, although I will never ever ask you, angular momentum L is equal to moment of inertia into angular velocity. It is not very important for me as a chemist. मैंने इसका कभी कोई use ही नहीं करना. Maybe you people know from class 10th, moment of inertia is given by m into r square. Angular velocity is v by r. So angular momentum is going to be mvr. Just read it. See once again the same type of concept we are discussing. Let this be the staircase which we were discussing. Let this be you. हमने आपके दो पांव बनाए हैं. So you can present here, here, here. That is your height. Let it be. मैंने बोल दिया आपकी जो height है वो 1.5 meter है. So if you are here, your height can be what? 2 meter. Your height can be 2.5 meter. That can be only how much? The 3 meter and so on. You cannot have any other height. This is the correlation. Just this is to help you understand. This is the actual way what we have done. That electron can exist in certain fixed path around the nucleus where angular momentum is the whole number multiple of h by 2 pi.
h by 2 pi is also written as h bar, right? Can we go ahead? The सर ये जो question which एंगुलर is, मोमेंटम है हाँ बेटे, नंबर ऑफ ऑर्बिट के साथ ये इंक्रीज करती है। हाँ, एंगुलर मोमेंटम जैसे जैसे न्यूक्लियस के साथ जा रहे हो, व्हाट इज इट हैपनिंग? इट इज इंक्रीजिंग, एंड इट इज इंक्रीजिंग इन द पैकेट्स, यू अंडरस्टैंड? लाइक इन फर्स्ट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन इज देयर, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम का एक पैकेट होगा, वो किसके बराबर होगा? h by 2 pi। सेकंड में उसके बाद 2 पैकेट्स होंगे, थर्ड में 3 होंगे, फोर्थ में 4 होंगे, 5 होंगे। ईच पैकेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी गिवन बाय व्हाट? h by 2 pi, यू अंडरस्टैंड? सर पर हर एक ऑर्बिट में तो अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनमें वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी। हाँ, हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, राइट? अभी बोहर बताएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी गिवन बाय 2n स्क्वायर, ये बोहर बताएंगे। चले आगे। और यस सुनो, अभी इनके आगे भी इंप्रूवमेंट आएगी बेटे, ये फाइनल मॉडल थोड़ा होगा, इनसे आगे भी इंप्रूवमेंट आएगी। यू विल बी एंटरिंग इनटू अ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। हैव यू पीपल रिटन mvr is equal to nh by 2 pi? You should simply write, I'm sorry, मुझे ऐसा लिखना था, L is equal to mvr is equal to nh by 2 pi. Please write it, right? I hope you have written it, because I will be giving you around 20 total relationships till now. Moving ahead. Yes, Amodini, can you unmute yourself? Will you talk with me, son? Amodini, this is really energy. Yes, sir. Energy of an electron in an orbit is stationary, matlab fixed. It will not, it क्या मतलब? Electron will not gain or lose energy unless and until it jumps from a particular orbit. It jumps from a particular orbit. See what he's telling us. You know, these all relationships will be proved, but later on, right? Not now, but maybe later on. See, this is going to be the first orbit. What Mr. Bohr is saying, जब तक electron चाहे, it can move in an orbit without, yes Gudiya, without lose or Lose loss or gain of energy, right son? energy. Language देख, Yes, sir. the energy is fixed, that is what? Stationary. And ध्यान से electron is, हाँ जी गुड़िया, moving. Electron is not stationary. यहाँ पे बच्चे कभी कभी गड़बड़ी कर जाते हैं. Do you understand the concept? Electron is moving, but its energy is fixed. Imagine something like this. The earth is moving around the sun in a well-defined path given by the nature. Now, till whatever time the nature wants, earth want, it will continue to move with the fixed energy. It will not gain or Gudiya lose energy. Lose Right, sir? energy. It will never ever lose energy. Yes, sir. एक और चीज समझो, हमने बस करनी ही प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है, ठीक है बेटिया? कोई जल्दी नहीं है, जस्ट लिसन व्हाट आई वांट टू टेल यू। ऐसा मानिए आपकी जहां पे आप रहते हैं ये आपका घर है, सपोज, राइट सन? जहां पे आप खड़े हैं आपकी मिनिमम एनर्जी है, हम उसको बोल दिया करते हैं ग्राउंड स्टेट। व्हाट इज ग्राउंड स्टेट? द मिनिमम एनर्जी स्टेट, राइट सन? नाउ Yes, sir. आप जैसे जैसे मान लीजिए आपके पैरों के नीचे, सिर्फ समझाने के लिए गुड़िया, न्यूक्लियस है, आपके पैरों के नीचे न्यूक्लियस है। जैसे जैसे आप अपने घर में ऊपर जाते हैं तो बेटे आपकी एनर्जी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? इंक्रीज, राइट? Increase होगी, sir. नहीं, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपकी एनर्जी बढ़ेगी, जब आप नीचे आएंगे तो आपकी एनर्जी क्या होगी? मिनिमम, Decrease. right? So as
never ever forget, never ever forget, ये जो हम हाइट का अंदाजा लेते हैं ना, ये तो हम धरती पे लेते हैं। इस ब्रह्मांड में यूनिवर्स इज स्फेरिकल, सो देयर इज नथिंग नोन एज हाइट। व्हेन यू आर सेइंग कि मैं धरती से दूर जा रहा हूं, आप इसको हाइट कह सकते हैं, बट इट इज बेसिकली यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, सो इट इज गोइंग टू बी स्फेरिकल डिस्टेंस ही है हमारे पास। तो इफ दिस इज अ न्यूक्लियस, ध्यान से समझ गुड़िया, as electron moves away from the nucleus, electron moves away from nucleus, अब इसको और बढ़ाऊंगा, energy is going to increase. increase, Remember, this is very very important term and याद करने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसको इतनी बार रिपीट कर दूंगा कि it will be printed in your mind, right son? Will yes you sir, ever? Never ever. आपको हमेशा याद रखना है, जैसे जैसे आप धरती से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आपकी एनर्जी बढ़ रही है, आप जैसे जैसे धरती की तरफ आ रहे हैं द एनर्जी इज गोइंग टू बी द लीस्ट। ऐसे ही एटम में इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, पढ़ के बताओ, इट्स एनर्जी इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग। increased, एंड ऑली, जैसे जैसे हम धरती की तरफ आएंगे, इस वक्त किसका एग्जांपल ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का, electron का, comes towards nucleus, बताइए उसकी एनर्जी क्या करेगी, decrease, वेरी राइट। रेपिटेशन अभी आगे कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा, ठीक, अभी सिर्फ याद करवाया गया है, दिमाग में डाला गया है कि एनर्जी कब बढ़ती है और एनर्जी कब लूज होती है, राइट सर? अब देखिए what Bohr sir is saying to us, right? Mr. Bohr is saying that if this is a nucleus, let it be different orbit, Gudiya. Let it be electron is sitting in first orbit, right? If electron goes from here to here, what is that? You will call it transition. You will call it jump from one level to second level. You can call it their lower level to what level? Higher level. higher level, तो गुड़िया एनर्जी इज क्या लिखूं, absorbed, वेरी राइट। नाउ once again, now suppose our electron is now in n is equal to 2, it want to go from n is equal to 2 to 3, I will call it, it is going to even higher. Now son, it can be either 1 to 2, it can be either 1 to 3. How you will write it later, n1 arrow n2 n1 arrow n3, और बेटा देख जनरल बनाते हैं n लोअर टू n हायर, क्या समझ आया? रिप्रेजेंटेशन ए बी yes और सी। sir, In these cases what shall you say, energy is absorbed or absorbed, energy is required, is it clear? Great, unmute कर लो साक्षी, can you use your mic बढ़िया? साक्षी, आई वाली साक्षी, we have two साक्षी, साक्षी कुमारी। Yes, yes sir. साक्षी, सुन बेटे, देख जरा, आराम से बैठ जा, ठीक, कोई जल्दी नहीं है। now an electron is coming home, it is coming from n is equal to 3 से n is equal to 2, you tell energy will be released or absorbed, Released. very right. If it is coming from 3 to 2, then you can write it like this, or you can write it 3 to 2, or 3 to 1 भी लिख सकते हैं, और बेटा in general you can write n higher to lower. In all these cases energy will be Released. very right. And what Bohr is saying is that till electron want, it can sit in this orbit, it will not lose or gain energy, it is in this orbit, it will not lose or gain energy unless and until it is in a orbit. It moves away or closer to the nucleus, only then energy change is going to happen. Do you understand? Do you Yes, imagine? sir.
that you are sitting on the first floor of your house, your potential energy is more in the first floor, and ground floor your potential energy is lesser. If you keep on sitting in your first floor, will the energy change? No. No. If you go the third floor, fourth floor higher, or you come lower, only then your energy is going to change now. Yes, sir. So that is what Bohr is telling you. I'm telling you, first stage it might look little bit different, but very soon you will be master of that. Just keep on watching. I will make you remember everything better, all of you. Now, the next part. Electronic energy. You can mute video. You can mute. Again, unmute karo. Again. Yes, again. Again, En. What is En? N can be 1, 2, 3, 4, मतलब orbit रहता, right? Yes. अगर मैं लिखता हूँ E1, energy in first orbit. अगर मैं लिखता हूँ E2, उसका मतलब होगा energy in second orbit, third orbit. अग्रिम याद रखने के लिए बेटे, right? An atom can have infinite shells बोल दो, orbits बोल दो, ठीक, और एनर्जी लेवल बोल दो. बोहर के ऑनर में इनको अभी तक बोहर ऑर्बिट्स बोला जाता है. सुन बेटे, पढ़ के बता मैंने क्या बोला. An atom can have infinite shells, orbits, or energy levels. या भरे कितने हैं दैट इज अनदर स्टोरी. जैसे हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन रहता है, यूरेनियम में 7 शेल में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बट किसी भी एटम में है इनफाइनाइट. भगवान ने इनफाइनाइट उनको फ्लोर्स दी हैं, बट उन्होंने लिमिटेड दिए. क्लियर सर? So that is what Yes, sir. I want to tell you. An atom can have infinite shell. There is no restriction on that. वो तो फ्री में है, कोई जमीन थोड़ा ही है जो हमने दबानी है. ये तो भगवान ने दुनिया में जितनी इतना खाली जगह डाली है एटम के अंदर, वो कहीं भी हो सकता. But yes, the orbit has to be defined. Only those orbits are permitted in which the angular momentum is going to be whole number multiple of h by 2 pi. On the board, son, Bohr is giving us a relationship. Energy of nth Bohr orbit is minus r h z square by n square. मैं याद करवा दूंगा. Where n can be 1, 2, 3, z is going to be बेटा atomic number. तुम्हें पता है हाइड्रोजन के लिए जैसे 1 होता है, हीलियम के लिए 2 होता है, it is going to be lithium plus 2 के लिए 3 होता है, and so on. The RH is going to be 13.6 electron volt per atom. बैठे रहो, मैं याद करा दूंगा, guaranteed, right? But give me time. 13.6 electron volt per atom, 2.18 into minus 18 joule per atom, 1312 kilojoule. ये गलती है, मेरे से भी ठीक कर रहा हूँ, kilojoule per mole. Let's see. Pick your pen and page. Everyone, rough page को उठा लो और हम मिलके लिखते हैं, ठीक? Please write along with us. No testing, no rote learning, simply practice. Energy, E represent, yes Agrim, energy. Yes. N represent energy of electron in the nth Bohr. N shell. तो अग्रिम n की वैल्यू क्या 1.1 हो सकती है? No, sir. Yeah, it can be in multiples of 1, 2, 3, 4, so on. बेटा तुझे नहीं आता, सिंपली आराम से लिख r सबस्क्रिप्ट h z स्क्वायर by n स्क्वायर. राइट सर? Yes. Where r h is a constant. अभी बताते हैं. z is going to be राजा, बोलो. Atomic number. हाइड्रोजन के लिए कितना है? 1, हीलियम प्लस के लिए कितना है? 2. वेरी राइट. व्हाट इज n? Whole number. क्या बोलोगे अगली बार? बोहर Bohr ऑर्बिट orbit. or simply orbit. What is orbit? Where electron can move, right? And this can be what, son? पढ़ के बताओ. Any number. Positive integral number 1, 2, 3, 4.
इट इज क्वांटाइज ना, तो 1.1 1.2 नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पता है एंगुलर मोमेंटम हैज टू बी द मल्टीपल ऑफ h/2 राइट अग्रिम? Yes. गुड। इशिता कपूर, गुड़िया अनम्यूट कर अपने आप को। Yes, sir. देख, मेरे मुंह से ना हमेशा एक ही चीज निकलेगी गुड़िया, मुश्किल से मुश्किल जगह में इशिता याद मत करना। एंड बिलीव मी बेटे, मुश्किल से मुश्किल जगह से बहुत आसानी से निकाल लाऊंगा, ठीक? राइट सर? Okay, sir. तो ये देख, ई छोटा और वी, इसको बोलते हैं डॉली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक? ईवी इज इक्वल टू 1.602 माइनस 19 जूल के बराबर होता है, राइट? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू दिस मच जूल। दिस इज नॉलेज, दिस इज प्रैक्टिस, अपने आप हो जाती है, ठीक? मुझे भी नहीं पता थी, मैंने जब इसको 50-100 टाइम्स यूज किया, ऑटोमेटिकली इट इज प्रिंटेड हियर। तो डियर, दिस इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बिलीव इन द पावर ऑफ रेपिटेशन। पढ़ के बता, RH की एक वैल्यू बता रहे हैं, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसका मतलब बेटिया, per atom. एनर्जी, ये मत लिखना, ऑफ एन एटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी गिवन बाय माइनस। थोड़े समय में एक्सप्लेन करूंगा ये माइनस क्यों आ रहा है, ठीक? 13.6, यस गुड़िया, Z स्क्वायर n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इज इट क्लियर? दोबारा देखो, Yes, sir. 2.18 into 10 to the power minus 18 joule per atom. That's the second relationship. What is this? Value of RH. यानी कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो हम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं? -18, यस गुड़िया, जूल पर एटम। Atom. ये सब डेरिवेबल है, बट वी डोंट नीड इट। तीसरी वैल्यू देख, 1312, राइट? इट इज किलो जूल पर मोल। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैन बी रिटन एज Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। मैं सेकंड वाले में Z स्क्वायर n स्क्वायर लिखना भूल गया बेटा। इट इज व्हाट? किलो जूल पर मोल। प्लीज राइट डाउन दिस, राइट? इररिस्पेक्टिव, आपको समझ आया कि नहीं आया? और ये एक बबल, दूसरा बबल और तीसरा, ब्रदर ये सारा पेज अपने रफ में लिख Yes, लीजिए, sir. मेरे ऊपर छोड़ दो बस। Okay. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी गायकी। सर वो जो आपने नीचे लिखा है EN एनर्जी वाला, वो माइनस नेगेटिव साइन तो नहीं है ना? सब में है माइनस, वो नेगेटिव साइन है ना? सब में है, सब में है, एक में नहीं सब में है। ठीक है सर। एनर्जी के सारे रिलेशन में गुड़िया माइनस के साइन है, और माइनस क्यों है अभी एक्सप्लेन करूंगा गायकी, तकरीबन 10 मिनट में ओके सर। ये भी एक्सप्लेन होगा वाई माइनस। सर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी बेटे। जैसे जूल होता है ना, जैसे अर्ग होता है, जैसे कैलोरी होता है, ऐसे एक और यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी होता है। सर ये एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं। हाँ, एनर्जी को हम अलग अलग यूनिट में लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी अनुवंश अभी तो आंसर नहीं दे पा रहा हूँ ना बेटे, जैसे आगे जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी तेरे को डिफाइन करूंगा, कैसे डिफाइन करते हैं ये चीज वहां क्लियर होगी बेटे। ओके सर। तो क्वेश्चन जरूर पूछते रहो, बट दे विल बी आंसर्ड एट एप्रोप्रिएट प्लेसेस। ये सारे एक्सप्रेशंस भी डेरिवेबल हैं, बट वी आर नॉट नीडिंग इट, सो दैट इज व्हाई हम इसको अननेसेसरली कोई काम वो नहीं करेंगे जिससे हमें जरूरत ना पड़ती। Have you copied, my dear friends? यस सर। अनुवंश आपका जवाब अभी दूंगा, आपने जो पूछा इसके बाद पहले मुझे बता दीजिएगा जब ये कॉपी हो गया।
Copied everyone? Shall we move ahead? Yes. गायकी, आगे बढ़े गायकी? सर सी डॉली, अभी अभी अन्वंश ने पूछा, इसको बस ऐसा लेना कि उसने पूछा और मैं जवाब दे रहा हूँ बेटा। यूनिट्स ऑफ एनर्जी काफी हो सकते हैं बेटे, जैसे जूल्स, कैपिटल जे लिखता है, अर्ग, राइट, इसको लिखता ही ERG है। इट कैन बी, गुड़िया सुना होगा शायद, कैलोरी, राइट। इट इज गोइंग टू बी, जो मुझे जरूरत पड़नी है, ये क्या है गुड़िया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको कैसे लिखते हैं, EV। अगर नहीं याद ना, याद तो करना ही नहीं, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ गुड़िया अर्ग, 4.184 जूल is equal to 1 calorie, and it is 1 electron volt, 1 point, लिख लो बेटा, इसको लिख लो, -19 joule, because in 2-year physics and chemistry you'll be using it many number of times. So Anvansh, it is something like this बेटे, माइल इज 1.610 किलोमीटर होता है, एक किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, मीटर इज इक्वल टू दिस होता है, एंड 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस होता है। इज इट क्लियर सर? Because the question was important in the coming time, so that is why I have asked you. Now Anvansh, there are 2-3 ways. Either you will be demotivated, हाय इतनी सारी एनर्जी, इतनी सारी चीजें हमें यूज करनी पड़ेंगी, either just believe in this part, gray matter, you will become master of that. I know it, right sir? Just relax. Yes, तो आगे चला जाए। यस, रोहित दी ग्रेट मेरे से बात करना चाहेंगे? यस रोहित। रोहित, एनर्जी ये कौन बता रहे हैं? बोहर सर बता रहे हैं, इनसे इज्जत से बात करते हैं हम हमेशा। ये क्या चीज थे, हम जो कुछ भी आज कर रहे हैं, because of this breed of the scientists who did everything. Repetition, energy is given by minus RH(Z) square by N square. RH can be 13.6 electron volt per atom, right Jasleen? 2.18 into -18 बेटा जूल पर एटम। जसलीन मैंने ऐसे याद किया था, जसलीन अपने आप को अनम्यूट कर सकता है इफ यू वांट। सी बेटे, ये कहता है, ये 18 था ना जसलीन, सो दिस इज गोइंग टू बी -18, जस्ट अ वे टू कीप इट इन योर माइंड, राइट? एंड 1312 किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल जरूरत पड़ने पे यूज किया जाएगा। अब एक काम करो, the idea is repetition, the idea is repetition. अभी अभी आपने लिखा energy is given by -1312 Z square by N square, कोई भी ले सकते हैं ना dimension, किलोजूल पर मोल। Let us calculate energy of an electron in 1 mole of hydrogen atom. तुली सुन रहा है बेटा मेरी बात? मैं आप लोगों को आपके अक्सर सरनेम से बुलाता हूं, तो यू आर मिस तुली, राइट? कभी कभी कदम, कभी कभी जो पड़ जाएगा गुड़िया। तो गुड़िया कैलकुलेटर यूज कर सकता है, कोई टेस्ट नहीं है। तो मेरे को बता, हाइड्रोजन एटम के लिए Z is equal to 1 वो आता है ना? Yes, sir. Depending on which orbit electron is present at given time, its energy will be different. That can be given by relationship 1. Do you understand मैंने क्या लिखा बेटे? Yes, sir. कोई ज्यादा टेंशन वाली चीज नहीं है, सवाई का नई चीज सीख रहा है, इस तो कोई बात नहीं। चल Yes, sir. ऐसा कर, कैलकुलेटर यूज करेगा, कोई जल्दी नहीं है, अवेलेबल कर ले, ऑल ऑफ यू
कैलकुलेटर अवेलेबल कर लो, जितनी बार चीज को देखते हैं तो हमें फायदा होता है। 2 में 4 5 6, अभी अभी अमोदनी ने बताया था ना, जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या करेगी, बढ़ेगी। Yes, तो sir. यहाँ पे हाइड्रोजन है तो Z तो 1 हो गया सबके लिए, Yes, sir. n फर्क होगा। तो बहन, डू यू एग्री दैट दिस इज गोइंग टू बी 1312 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर बेटे? Yes, sir. क्योंकि ऊपर लिखे ही हुए सबके सेम है, तो पहले में एनर्जी कितनी होगी 1312? Yes, sir. कैलकुलेटर यूज करना, माइनस 1312 डिनोमिनेटर में क्या लिखूं? यस कदम, 4. वेरी राइट, कैलकुलेट कर। So minus 328. Very good. It's not a test. I just want that it's a way of repetition. That's it. Otherwise nothing. See ऊपर वाला relation, put the value, get out of that. So by 6 or 10 times you are comfortable using above relationship. Yes, everybody should contribute the way you contributed, bete. So 145.7. Very good. 145 ले लें डॉली? Yes. Round up. Yes. सुनो, किसी ने ये वैल्यू याद नहीं करनी है. No need of memorizing. That is science. Whenever the relationship is going to be used, we know where it is there. चलो मेरे प्यारे से बच्चों, So इसकी 82 है. वेरी गुड, राउंड ऑफ कर देना है. Yes. You should know how I'm using it. It's important. 52.48. 52. 52 ले लेते हैं ना. Very right. Please write it. Write all the So expressions. 36. 36. Minus 36.4. Please write down the values. कोई जल्दी नहीं है बेटे. Idea is to learn. Idea is never to cram. रट्टा मारोगे तो इसको 2 घंटे में खत्म कर सकते हैं. समझेंगे तो हो सकता है 4 घंटे लगे. But that is what is going to go with you. So next की 26.7. Very good, बढ़िया. 6.7, 27 कर दूं? है ना? Yes sir. All approx. Please write it down because I will be needing it on the next page. Everybody please write it down. Take it slow. No hurry. No targets. सिर्फ एक ही टारगेट है करमजोत सिंह, समझने का. हेलो सिद्धार्थ, कैसा है बेटे? तनवीर दीदी समझा? Yes, sir. Everybody copy it? Sir. Right बच्चों? Okay. I'm shifting the page. I will come back here just a minute. Right? 1000 times repetition. So चिंता तो किसी बात की करनी ही नहीं है. दोस्तों, सिर्फ आपके मन में एक पिक्चर बनाने के लिए अगर मैं ऐसी ऑर्डर बनाऊं तो आप समझ सकते हैं n is equal to 1 सबसे कम एनर्जी का होगा, है ना जी? कितनी एनर्जी है दोस्तों? 1312. अरे आपने लिखा हुआ. एंड देन बेटे द n is equal to 2. n is equal to 2 में कितनी एनर्जी है भैया? minus 328. Minus 328. Right? Just watch what I'm doing. I'm just putting some picture in your mind forever. Minus It is going 145. minus 145. Right? We are doing something very important. And what you are learning is, आपके मन में एक फोटो आ रही है. जैसे आप कहीं जाते हैं, कहीं चंडीगढ़ से बाहर, तो आपका मन अपने आप वो चीजों को याद कर लेता है. Right, Harshini? So this is 4. This is Minus Harshini? 82. Minus 82. Then bete, this is going to be n is equal to 5. How much? Minus Minus- 52. minus 86. Very good. Next is going to be minus 36. Next is Next- minus 27. Minus 27. Minus 27. Use calculator please. You understand delta का क्या मतलब होता है? Delta E. E2 minus E1.
This is higher, na? Yes, Harshini, can you use your mic, son? This is higher minus lower. So Harshini, how will you calculate? It is minus, please use calculator. Minus 1312. Yes, my dear friends, I want you to use it. 984. 984 kilojoule. Of course, that is the same, I'm not writing. Now, son, please use the difference between second and third. 183. Alright, oops, stop it. Stop it before we move ahead. 182, right? Even if it is coming 184, I don't mind. I just want you to compare. So now, this is approximately 1000 times. Hai na? This. And this is approximately 200 units. So that is, it decreases by almost 1/5. Yes. Any problem? See, this is the nature. You are not creating it. I'm not creating it. Nobody else can think of competing with the nature. Please limit our limitations. That's going to happen. You just see what beautiful things will come out of the nature. The atom exists. हम नहीं क्रिएट कर रहे हैं. हमारे पास ये आंसर नहीं है कि ऐसा क्यों है. हमारे पास तो ऐसा है. और हम उसको अपने फायदे या नुकसान के लिए कैसे यूज करेंगे, हम वो आपको समझाने जा रहे हैं. Now, my dear friends, please calculate between these two. Delta E. 63. 62, 63. Thank you, Gudia. Right? So that means this and this decreases further by almost, Gudia, how much? 1/3. Almost. You understand what is the meaning of almost, Hana? Now, my dear friends, please calculate this. 11. 30. 30. Right? Here it is 16. Stop Yes, doing sir. it. Here it is 9. 9. Here it is 9. You understand? See what is happening. What is the mother nature doing it? ऐसा क्यों है हमें तो नहीं समझ आया है, but हाँ हम observation में जा रहे हैं. What is happening here? I'm writing a statement. Do you understand? That is, the orbits are coming closer and closer in terms of energy. Yes, उत्कर्ष, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे? Yes, sir. देख मजेदार चीज, हम कुदरत को एनालाइज कर रहे हैं. भगवान कर क्या रहे हैं? एटम के पास इनफाइनाइट शेल है, पहले और दूसरे के बीच में मैक्सिमम गैप है 1000 यूनिट का. सेकंड एंड थर्ड के बीच में एकदम भगवान कम कर देते हैं. थर्ड एंड फोर्थ में और कम कर देते हैं. फोर्थ और फिफ्थ में और कम कर देते हैं. कुछ तो लॉजिक उनका होगा ना. भगवान कहिए, नेचर कहिए, कुछ तो ही इज क्रिएटिंग, राइट? Yes. एंड दैट कोरिलेटेड टू स्पेक्ट्रम. आप लोगों को हम 2-3 दिन से कुछ काम कर रहे थे. आप लोगों को ये सिखाया गया था कि E is equal to hc by lambda. याद आ गया? अगर इसकी जगह पे डेल्टा E रख दूं तो दिस इज गोइंग टू बी hc by lambda. बेटा अगर डेल्टा E को एक बार 984 बोलूं, अगर बार डेल्टा E को हेलो वो इज दिस या किसका अनम्यूट रह गया? यस, तो अनुवंश अनम्यूट कर सकते हो, राइट? अनुवंश. So this is going to be delta E is going to be 62. Yes, sir. Delta E is going to be 30. Right, sir? So what will happen? यहाँ पे वेवलेंथ जो आएगी वो मिनिमम नहीं आएगी, Yes, sir. और वहां पे जो Maximum. वेवलेंथ मैक्सिमम नहीं आएगी. Yes, sir. समझ पा?
इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करता है, सो इट विल बी एमिटिंग व्हाट, मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, as compared to if an electron jumps from here to here or from here to here. Anyway, do you people understand what I am telling to you? That as the orbits, we are moving away from the nucleus, orbits are coming closer and closer in terms of what? Energy. Shall I move ahead with it? आगे चलो। सर ये जो आपने पहले बताया रिपीट कर, बड़ी फ्रीक्वेंसी वाला, ये वाला लो जी, अभी बताता हूँ। ये देखो ना, 1 and 2 के बीच में एनर्जी गैप इज मैक्सिमम। सो इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हियर टू हियर और इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हियर टू हियर, वेयर एनर्जी गैप इज गोइंग टू बी मैक्सिमम? हियर। तो वेवलेंथ इज गोइंग टू बी मिनिमम हियर, ग्रेटर हियर, इवन ग्रेटर हियर, इवन ग्रेटर हियर। ये बोहर सर स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करेंगे, राइट? द वेवलेंथ, आपको याद है स्पेक्ट्रम में राइट हैंड साइड की तरफ वेवलेंथ क्या करती थी? वेवलेंथ होगी किस चीज की? इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आएगा, सो दैट विल बी एमिटिंग एनर्जी ना। इन्होंने कहा है ना यहाँ पे एनर्जी कम है, तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो द एनर्जी इज गोइंग टू बी मोर एंड इट कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट, देन दैट एनर्जी विल बी एमिटेड। सुनो, मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया है, मैंने सिर्फ आपको एक बस एक कोरिलेशन, एक दिमाग में एक आइडिया डाला था, राइट सर? तो अभी स्पेक्ट्रम की तरफ नहीं गया हूं, मैंने सिर्फ ये बताने की कोशिश की है। अनुवंश, इस फोटो को समझो बेटे। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, डू यू पीपल अंडरस्टैंड राजा, इज गोइंग टू बी 984 किलोजूल, दैट इज मैक्सिमम। दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? lesser. This is going to be better, even lesser. This is going to be even decreasing, and so on. What relationship we are using? Minus 1312 z square by n square kilojoule per mole. Right जी? आगे जा सकता हूँ? बोलो सर, एक बच्चों। चीज पूछ, दो पूछो जी, उत्कर्ष। सर आपने बोला था कि जब हम अर्थ से दूर जाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, पर इसमें तो उल्टा हो रहा है सर, जैसे हम दूर जा रहे हैं तो एनर्जी कम हो रही है सर। उत्कर्ष का क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है उत्कर्ष, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, द कोरिलेशन। उत्कर्ष एक बात बता बेटे, नंबर लाइन स्केल पे जाते हैं, राइट? यहाँ पे माइनस 1312 है, यहाँ पे बेटे माइनस 328 है, यहाँ पे ऐसे ही बोल दिया राजा माइनस 145 है, यहाँ पे माइनस 82 है। तो एनर्जी बढ़ रही है कि कम हो रही है? सर नंबर लाइन स्केल, यहाँ पे कहीं पे जीरो आएगी, यहाँ पे आगे चल के क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आएगी। बढ़ रही है, फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है। तो आपकी और हमारी स्टेटमेंट सेम है ना? एज यू मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एनर्जी क्या कर रही है? बढ़ रही है। अब इसका लॉजिक भी आ रहा है, ठीक है राइट? अब इसका लॉजिक भी आ रहा है, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहूंगा। As we move away from the nucleus, is the energy increasing or decreasing? इंक्रीजिंग सर। It is increasing. Is it clear, son? आगे जा सकता हूँ? यस सर। राइट। कुछ नई चीज आ रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर, रेपिटेशन हम कर चुके हैं। Orbitals are coming together in terms of energy, right? That is quite away from the nucleus. There is practically no gap between orbitals in terms of energy. अनुवंश, आपसे क्वेश्चन पूछा था तो आपसे बात इसलिए कर रहा हूं। अनुवंश, इमेजिन कीजिए हम एक ऐसी बिल्डिंग में घुसते हैं बेटे। अनुवंश अनम्यूट। यस सर। अपने मन को लेट लूज करो, इमेजिनेशन को लूज करो, राइट? दैट इज ओनली वे वी कैन अंडरस्टैंड साइंस, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। सो उत्कर्ष, वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, हम धरती से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास एक ऐसी बिल्डिंग है बेटे जिसमें फर्स्ट और सेकंड जो फ्लोर है उसके अंदर 1000 फीट का डिफरेंस है। मैंने फीट को एनर्जी बोल दिया, समझ आया?
जो दूसरी मंजिल है वो कितने फीट पे है? 1000 फीट। इसको 1000 अप्रॉक्स कर लेते हैं। सेकंड पे पहुंच जाते हो, जो उसके ऊपर थर्ड फ्लोर है, उसकी जो छत है दैट इज ओनली एट 200 फीट। जब आप थर्ड पे पहुंच जाते हो, आपकी ऊपर वाली जो फ्लोर है उसकी जो छत है दैट इज ओनली गोइंग टू बी 62 फीट के ऊपर है। फीट और एनर्जी को कोरिलेट कर सकता है दोस्त। जब फोर्थ पे पहुंचता है तो व्हाट इज हैपनिंग, द छत और सिर्फ 30 फीट पे आ रही है। डू यू अंडरस्टैंड? मैक्सिमम, लेसर, लेसर एंड लेसर। एक लिमिट पे तो जाके इधर से लेफ्ट या राइट देख, ज्यादा डिस्टेंस, कम डिफरेंस और कम डिफरेंस और कम डिफरेंस, एंड धीरे धीरे करके तो ये आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल मर्ज होने शुरू हो जाते हैं। ये हमें बोहर सर बता रहे हैं। राइट नाउ since you asked, so I'm keeping you on the unmute mode, son. See Utkarsh, sorry Utkarsh nahi, इस वक्त अनुवंश था। Anuvansh, you represent the class, so please ask question. Anyone else having a problem related with this concept, most welcome. Right बेटा? तो अनुवंश, इलेक्ट्रॉन इधर बैठा हुआ है, किसमें बैठा हुआ है? n is equal to 1। हम उसको एनर्जी देते हैं और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले जाता है, तो उसने कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब की? About 984। When it come back, it will emit that energy, and that energy can be converted into beta wavelength. Yes, You sir. understand? Now suppose the same electron now go from this to this. Now it will be always taking energy, and when it come back it will be emitting what amount of energy? 183। 180. That delta E hc by lambda हो जाएगा। इसको डैश कर देते हैं, क्यों कम हो गया? See, energy has decreased, so this wavelength क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। Understand or not? Yes, sir. Right? Tanveer, unmute करो। Yes, Tanveer. Tanveer, see video. We talk about say this. तो थोड़ा सा डिस्टेंस कम कर देते हैं तनवीर, like this dolly. Now electron has gone to this, so this is the energy which you have written, it is 62. So if it comes from here to here, then delta E2, yes Tanveer, it will be some lambda double dash, so the wavelength will be even increase. Alright, that was expected now, because E is inversely proportional to wavelength. You have done the question. Now, Yes, sir. do you remember spectrum, ultraviolet, visible, and what was the case? Again, the infrared and so on, the micro and the radio waves. This is one, this is two. Whom do you think is of more energy? In front of you? One. So out of say 2 and 3 and 1 and 3, which is of maximum energy? 1. 1. So beta, this transition you will soon find will result into a radiation falling in ultraviolet zone. You will very soon find when an electron jumps from second orbit to third orbit to second orbit, it will fall in the visible region. And when an electron jumps from 4 to 3, it will fall in which region? The infrared. Why? Because Bohr is telling us energy keep on decreasing. Are you understanding? कुछ दिमाग पे हिट हो रहा है कि नई चीज पे जा रहे हो, तंग हो रहे हो, नई चीजें आपके पास आ रही हैं. Last year we just calculated homologous series. Now we are calculating what is happening between an atom. एनर्जी का सोर्स कहां से है, ये पूरे का पूरा ब्रह्मांड चल कहां से रहा है. That is what we are doing. I'm just adding a point to your mind, right? And repetition will make you perfect. Orbitals are coming, orbits कहना चाहिए, अभी orbitals तो अगली theory में आएगा. Are coming together in terms of energy that is quite away from the nucleus. There is practically no gap between orbitals in terms of energy. Maximum energy
less energy, lesser energy, lesser energy, least energy, and so on. So if I translate this energy into hc by lambda की term में lambda, the wavelength comes out to be maximum that falls in the ultraviolet. This wavelength will be more because energy will be lesser. That will be falling in the visible region. That will be falling in the IR region. Why? Because मैं अपने मन में सोच चुका हूं कि मुझे आपको एक्सप्लेन करना था कोई चीज. The Lyman, धीरे धीरे करके मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ. Maybe by the end of next session I will be able to do that. Balmer, पढ़ के बताओ. Lyman, Balmer, पास्ट चेन, पाचन, पढ़ के बताइए. कोई टेस्ट नहीं चल रहा है. ब्रैकेट, पी फंड, Bracket, It, पखंड, P-fund, पखंड, P-fund, and and सिर्फ Humphrey. Humphrey. Try to see it. This falls in ultraviolet. This falls in visible. विजिबल, These all fall in which IR region, right? The Bohr model is coming closer and closer to explaining the spectrum of hydrogen atom and maybe other atoms. Shall we move ahead? Please, I have not explained it easily. I have just told you one thing, that as you move away from the nucleus, the energy gap is decreasing. Energy gap is decreasing, and see, this is what is happening. Now I'm going to सर ये जो explain. यूवी लाइट निकली एमिट होगी, सर वो जो हाँ। तभी एमिट होगी ना जब वो सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आए. या अभी समझाया नहीं है. थर्ड से आएगा फर्स्ट पे आएगा तो यूवी आएगी. किसी भी हायर से जब n इज इक्वल टू 1 पे आएगा, अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया बेटे ये, है ना. किसी भी हायर से आपने पूछा है, सो दैट इज व्हाई आई एम आंसरिंग. किसी भी हायर से n इज इक्वल टू 1 पे आएगा तो वो यूवी पे आएगा. किसी भी हायर से सेकंड पे आएगा तो विजिबल में आएगा. यू जस्ट थिंक यस बिकॉज एनर्जी इज डिक्रीजिंग. किसी भी हायर से थर्ड पे आएगा तो वो IR में आएगा. अभी तो मैंने ये एक्सप्लेन ही नहीं किया है, बट यस मैंने आपके मन में कुछ डालना शुरू कर दिया है. So the moment that comes out, you will be understood, you will be comfortable, right? चलिए उत्कर्ष जी अनम्यूट करिए अपने आप को. Yes. उत्कर्ष, बी ऑनेस्ट, एग्जैक्ट बताने की कोई जरूरत नहीं है. आपका वेट कितना है? यू कैन से एनी फिगर. 58. 58, एनी फिगर बेटे, कोई जरूरी नहीं है कि आपने मुझे ये. व्हाट इज दिस kg? दिस इज द स्टैंडर्ड. दिस इज स्टैंडर्ड, दिस इज यूनिट, है ना. स्टैंडर्ड Yes. यूनिट. क्या ये हमें नेचर ने, जब इंसान धरती पे पैदा हुआ था कभी आज से करोड़ों साल पहले, उसने हमारे हाथ में एक पत्थर रख के दिया था, जाइए केजी बनेगा? नो. नहीं. किसने बनाया? आपने मैंने मिलके बनाया. ठीक है, अपने मैंने नाम की जगह पे ह्यूमैनिटी का नाम लगा दो, है ना. वी डिस्कवर्ड इट. नाउ बेटे, अब हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मेजर करनी है. हालांकि मैं आपको रिलेशन दे चुका हूं, मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूं. वो माइनस कहां से आ रहा था? ठीक, ऑफ कोर्स कौन बनाएगा? हम बनाएंगे, राइट? Yes, sir. तो एक चीज दुनिया में याद रख, कहीं भी जाएगा जो मैं लाल पेन से लिखूंगा कभी भी झूठा नहीं होगा. Wherever you go, everybody please focus. This is a truth, valid anywhere in space, anywhere in this Brahmand, any two atoms combined. मैग्नेट अगर आपकी तरफ आए बेटे, मैं जब लिख दूंगा ना तो मुझे पढ़ के बताना, और मैं आपको कोई सच बता रहा हूं. यू हैव टू एक्सेप्ट इट, देयर इज नो अदर ऑप्शन. जहां भी कहीं पे भी उत्कर्ष अट्रैक्शन होगी, फॉर एग्जांपल बेटे पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट. फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आप जानते हैं ना इसमें अट्रैक्शन होगी. मे बी उत्कर्ष एक एटम दूसरे एटम के साथ जब भी मिलेगा, जो बॉन्ड बनेगा H+H, राइट, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब भी कोई बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड क्यों बनेगा? अट्रैक्शन से बनेगा. तो बेटे हमने लिया है एनर्जी इज रिलीज्ड. एनर्जी रिलीज से हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ती है. उत्कर्ष, दिस इज फंडामेंटल. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फंडा? दैट इज देयर नेवर to be questions. Attraction always what releases energy, stability will become. Yes, sir. दूसरा उत्कर्ष, इमेजिन कर रिपल्शन बेटे.
आपने पता नहीं किया है कि नहीं किया है, वरना करके देखना। 2 मैग्नेट्स लेना, उनका नॉर्थ और साउथ पोल पता लग जाता है। जब रिपल्शन होती है जहां पे, तो वो ऑपोजिट पोल है। आप एक का नॉर्थ दूसरे के नॉर्थ की तरफ लेके आएंगे, क्या वो जुड़ेगा? आप जितनी एनर्जी लगा दो वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वो कभी नहीं जुड़ेगा। वाई? नॉर्थ और नॉर्थ आपस में क्या कर रहा है? रिपल्शन कर रहा है। पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में क्या करेगा? रिपल्शन करेगा। और नॉर्थ और साउथ आपस में क्या करेगा? रिपल्शन करेगा। सो इस केस में एनर्जी इज ऑलवेज व्हाट? एब्सॉर्ब्ड। ऑलवेज एब्सॉर्ब्ड। दैट मींस एनर्जी क्या करती है? हमेशा इंक्रीज करती है। And that is always going to lead to which situation? The instability. Right? Yes, you to read it. Why read it? मुझे पता तुम्हें समझ आ गया है, बट मुझे फंडामेंटल्स को रिपीट करवाना अच्छा लगता है। एज अ टीचर आई शुड डू दैट। बेटे ये जो लाल पेन से लिखा है, कैन यू रिपीट इट? in attraction, energy is released, which leads to stability, and in repulsion, energy is absorbed, which instability. बिल्कुल सही बोलेगा, बिल्कुल सही बोला है। नाउ करमजोत, माइक चलता है बेटे? करमजोत सुनो। Yes, sir. ये करम पॉजिटिव है बेटे, न्यूक्लियस ले ले, ये इलेक्ट्रॉन ले ले। तो राजा अगर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएगा, अट्रैक्टिव रिपल्सिव होंगे? यस, पढ़ के बताओ करम। इट विल बी अट्रैक्टिव फोर्सेस, और अट्रैक्टिव से एनर्जी विल बी ऑलवेज करम क्या होने वाला है बेटे? एनर्जी इज गोइंग टू बी रिलीज्ड। राइट? अब करम इमेजिन कर, कोई चीज बहुत पसंद है, लेट इट बी तुमने कोई घर में पेट पाला हुआ है, तुम्हारे पास एक सुंदर सी कैट है और तुम उसको प्यार करते हो। व्हाट इज द लव? दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन यू एंड योर पेट। और मैं उस पेट को तुम्हारे से खींच रहा हूं, तो क्या मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी कि एनर्जी मुझे मिलेगी? एनर्जी खींचना पड़ेगा ना, तो एनर्जी रिक्वायर्ड। तो बेटा इमेजिन कर, वो पेट की जगह से इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर लेके जाऊं, तो मुझे एनर्जी इज, हाँ भाई पढ़ के बताओ, रिक्वायर्ड, एंड इट विल बी व्हाट? अब्सॉर्ब्ड। दैट इज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? फंडामेंटल बेटे, फंडामेंटल चेंज नहीं होते तो ये कभी भी कहीं पे सिंह साहब चेंज नहीं होगा। कैन आई मूव अहेड? अब Yes, we are going to fix the standard. Why do you always drive right car on the left hand side in India? And maybe why do you drive right hand side पे car? आप अगर इंडिया से कहीं बाहर कहीं देशों में होता है, जैसे अमेरिका कनाडा में होता है ना, जर्मनी में होता है, तो आप राइट की तरफ चलाते हैं। What is this? These are rules, cannot be broken. And who makes the rule? We make the rule, right? Always remember at infinite distance from the nucleus, right? Infinite distance from the nucleus, electronic energy, इसको लिखते हैं E के पैरों में infinity, is assumed, taken to be zero. Infinity, where neither the electron is feeling any repulsion or you can easily take it away from the nucleus, that point is going to be taken as infinity. Infinity को never ever imagine that when I talk about infinity, that I'm going to take you to the Neptune or Pluto or maybe center of the universe. Never. Infinity means wherever you and my interaction is going to stop. They can be just out the room, outside this room where I am sitting. करम कुछ चीज समझ पा रहा है? At infinite distance from nucleus, पढ़ के बता जो मैंने अंडरलाइन किया है, electronic energy fixed to be zero. equal to be zero, ऐसा हमने मान लिया, और अब वो मेरे आपके सबके ऊपर it will be admit होगा, it will be used, right? Riya, can I use your mic, Vidya? Yes, Riya Sharma,
Can I use your mic? Ria, let it be the nucleus, Vidya. Let it be the nucleus. If Ria's mic is not working, then Gaiki, please step in. Right? Ria, this is going to be the nucleus, Vidya. ठीक रिया? रिया और गायकी जिसका भी माइक चल रहा है बोलो। इट्स गायकी। गायकी डोली यहाँ पे हम ले लेते हैं that is n is equal to infinity. You understand infinity? Where the electron will be having no attraction towards the nucleus. My son, you just assume this energy to be what? Zero. Assume to be zero. Now be very slow, because when I call this screen off, you have understood. Let an electron be n is equal to 2 orbit. Gaiki, if it go from 2 to 3, then energy is going to be duly absorbed or released. Very right. If it go from 3 to 4, Vidya, it is going to be what? Absorbed. Very right. Perfectly well. So can I write like this? It is going away from the nucleus. Generally, I'm going to write it n lower. Will you understand, Dolly? N lower to n higher. Energy will be what, son? Absorbed. What is the maximum value of energy to the electron in an atom? Yes, 0. Yes, sir. Now, please be with me, stay with me. Now, watch it what I'm going to say. At infinite energy, electronic energy is assumed to be 0. 0. If an electron comes closer to the nucleus, so energy will increase or decrease? Decrease. Very right. If initial was 0, then Dolly, energy will be taken as? Bolo? Negative. Negative. Do you understand? The moment I was giving you those expressions, I was always writing energy to be minus. See, what did you write there? Minus RHZ square by n square. This is repetition. Now you may be slightly more comfortable with whatever we wrote that time. 13.6 Z square by n square. Electron volt per atom. Let your mind reproduce the data. Yes, Gudia? Minus 2.18. 2.18 into 10 minus 82. Yes, your level is increasing. Please report it. अभी भी याद नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. But कर लेंगे यार, अपने आप कर लेंगे. And we will grow as a team. This is 1312. Read from that page. No restriction. But read it in a way. Right, son? Now, that is why I have brought this slide. Why electronic energy is given the negative sign. Sana, unmute yourself. Say, Sana. Remember, attractive forces always lead to what? Release of energy. That is going to be what? The negative hoga. Wherever attraction is going to get, one atom, hydrogen and chlorine, you are mixing acid and base. What happens? Attraction happens. Energy is released. Temperature बढ़ता है. Right? अभी हम temperature की बात नहीं करेंगे. Yes, Dolly. Repulsive forces always needs energy. It is going to be taken as positive. Absorb. Right? मैंने आपको कोई चीज दी है तो आपकी तरफ वो बड़ी है. Remember, release in energy will be taken as बेटे negative. कम हुई है. ठीक? And electronic energy, En goes for electronic energy at infinite distance from the nucleus is always taken as 0. That is, E infinity is taken as 0. Just a hypothetical set, the nucleus, the various orbits as defined by Bohr. An electron, see the green pen. Electron is moving away from the nucleus, lower to higher. Will you understand what is L and H? Lower to higher. Energy is going to be absorbed, and the energy will be increasing. Now see the black color.
इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू द न्यूक्लियस, ये सब बोहर सर बता रहे हैं हमें. So electron negative, this positive, it will be attraction or repulsion? Attraction. Attraction. So energy is released. How will you write it? E higher to E lower. Energy is going to be released, and that is going to be taken as negative. Stay with me. I'm shifting the slide. Now the same thing, whatever we discussed, that is in the words. Since at infinity we are taking energy to be zero, when an electron start coming closer to the nucleus, it suffers fall in energy. Since initial energy was zero, decrease in energy means negative value, right? So now explain in your words why electronic energy is given the negative sign. You remember we wrote when we were doing this relationship, minus was there. So now I'm explaining you why, asking you why minus is there. It's not a test. It's, you can read it and you can explain it. Yes, sir. Go ahead. So because जब energy higher से lower आती है तो release होती है, और that means कि कम होती है. तो जब energy infinity पे zero होती है तो वो उससे हमने ऐसा माना है ना? Yes sir. Assume to be zero at infinity. तो जब वो release होके कम energy कम उस पे आती है, हायर एनर्जी पे आती है, तो फिर वो कम होके जीरो से नेगेटिव पे आ जाती है. Yes. Now see, do you understand the first point? At infinity, electronic energy is going to be zero. When electron starts coming closer to the nucleus, it suffers fall in energy. Now see बेटे, इमेजिन करो, थोड़ा हंस भी सकते हैं हम, है ना? हमें हमेशा इतना सीरियस सा बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है. सना, imagine this is बिटिया I, this is you, right? Electron. Of course, nucleus will be taken as pradhan, the center of an atom. So these are going to be different benches. Assumption, please, right? Electron के साथ correlate करो. You can come closer to me in words. Electron can come closer to the nucleus. Energy will be sun, release or gain? Released. Electron is coming here. Energy will be what? Released. And electron can also go from here to here. Energy will be absorbed or released? Absorbed. Very right, very right. Absorbed. Now, beta, it is coming from here. It will be released or absorbed? Released. Please watch it. Right, this one. Absorb. Please don't copy it, right? This is just to make you understand. Now, please, very important thing. Be with me. Imagine. See, this is the first orbit. This is the unique orbit. From first orbit, electron can go and absorb energy, but electron cannot jump into the nucleus. Why? If it happens, its angular momentum. You understand what is angular momentum? mvr. Electron will be चिपक जाएगा ना nucleus के साथ. It will become zero. That is going to be not defined. क्या आपको फर्स्ट बेंच से कूद के मेरी गोदी में आके बैठने की परमिशन है क्लासरूम में? नो. यू कैन कम क्लोजर, फोर्थ से, सेकंड से, थर्ड से, फर्स्ट पे आ सकता है, बट कैन यू सिट इन माय लैप? नो. So if it happens, the positive and negative are going to combine, and that means the death of the atom. Bohr said, no, it can happen. It cannot happen. अगर इलेक्ट्रॉन को जिंदा रहना है तो अनुवंश दी ग्रेट, उसको मिनिमम एंगुलर मोमेंटम बेटे कितना रखना होगा? मिनिमम. कैन इट बी लेस देन दैट? h/2 नो. ये भी आगे प्रूव करेगा, डी ब्रोगली इनको प्रूव करेंगे. अभी जो आप सीख रहे हैं ना, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, ये आगे आगे सब चैप्टर खुलते चले जाएंगे. देख, सब कुछ वही मिलेगा, बिकॉज मदर इज देयर. हम तो सिर्फ उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे. इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं, बट हम क्रिएटर नहीं बन सकते. अनुवंश, बी विद मी सन.
I'm asking you something, repetition, right sir? No test, as I say. N is equal to 1. What is that? First orbit is a unique orbit in the sense that from it energy can only be absorbed. वो दूर जा सकता है. If an electron loses energy from n is equal to 1, it would have fallen into nucleus and its angular momentum will become 0, that is not defined. क्या angular momentum 0 defined था? बोहर ने किया था? No. So can an electron live in the nucleus? Can an electron jump from n is equal to first to nucleus? Your answer is going to be son, no. No. तो याद है रदरफोर्ड को Radioactivity. प्रॉब्लम दी थी. पेज नंबर 40 याद रखना बेटे, वापस आएंगे है ना, स्लाइड्स बहुत होती है ना, तो मैं किसी की ड्यूटी लगा देता हूँ. यू रिमेंबर क्लर्क मैक्सवेल सेड कि रदरफोर्ड आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है. रदरफोर्ड सेड यस सर. Then can you explain that why an electron does not fall into the nucleus? रदरफोर्ड का आंसर क्या था? No. समझ आ गया ना, क्योंकि उनको पता नहीं था. But Bohr is saying yes, I know it. I know that अगर इलेक्ट्रॉन को जिंदा रहना है अनुवंश, तो उसका एंगुलर मोमेंटम बेटे मिनिमम कितना होना पड़ेगा? The h/2π. उससे नीचे एंगुलर मोमेंटम नहीं, क्योंकि उसकी अट्रैक्टिव फोर्स उसको अपने साथ ले जाएंगी एंड दैट विल लीड टू एनिहिलेशन. और आपको कभी बताएंगे इसको के इलेक्ट्रॉन कैप्चर बोलते हैं. शायद तुम लोगों ने नहीं सुना होगा. के इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है? एटम बिल्कुल ठीक ठाक है, राइट? कभी कभी पता नहीं वो क्यों होता है, हमें रीजन नहीं पता है, उसमें से इतनी एनर्जी निकलती है, वी कांट डिफाइन इट की एनर्जी आई कहां से है. उस समय एटम का कोलैप्स होता है. The innermost electron falls into the nucleus. आपको पता होगा, शायद आगे बताने वाला हूँ, K का मतलब होगा फर्स्ट शेल, LMN. कभी कभार उसमें से भी होता है, but we do not know the reason, but yes it happens. So, but for exceptions are always there. आपके लिए बेटे, can you explain why an electron does not fall into the nucleus? Your answer is because its angular momentum is, हाँ जी बेटे, not going to be defined. 0. Right? आगे जा सकते हैं. देखो बोहर जी क्या क्या बताना शुरू हो गए. अब देखना यार, अग्रिम मेरे से बात करोगे? यस अग्रिम. अग्रिम एक बात बता बेटा, तुम्हारे घर की बेटे ऐसी फ्लोर्स हैं, लेट इट बी फर्स्ट फ्लोर, लेट इट बी सेकंड, लेट इट बी थर्ड एंड सो ऑन, राइट अग्रिम? थर्ड एंड सो ऑन. You can go from here to here, here to here, here to here. Why? कैसे? Absorbing. And at the same time, son, you can come from here to here, here to here, here to here. By what? Anji? Releasing energy. Releasing energy. Now, this and this, how much energy should be there? You understand? E higher minus E lower. What is 3 and 2? 2 and 3 हम डाल देंगे. अब हमारे पास एनर्जी आती है बेटे, है ना जी? Yes. So we can calculate it. Now what is going to happen? I want you people to pick pen and page. Please, everybody pick pen and page. Write it. मेरे साथ लिखेंगे. So you people remember En is minus RHZ square by N square. Please write it. Otherwise, this will going to turn into rote learning. Done? Yes, sir. Ashmi, right? See better. Now E1 is going to be अग्रिम. ठीक है, E1 का मतलब कोई भी हो सकता है, 2, 3, 4. E1 is going to be राजा minus RHZ square by N1 square. Agreed? अरे N को 1 पुट कर दिया ना यार. Yes, sir. गुड बेटे, साथ साथ में लिखता रहा. ये सारा न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट होगा बच्चे. डन अग्रिम? Yes, sir. If I write E2 minus RH Z square by क्या लिखूं? N2 whole.
Very right. Write it and let me know when you have written. We will go ahead. Yes, sir. Now delta E change will be E higher minus E lower. Yes. और इस वक्त ले लेते हैं E2 minus E1, where E2 can be any higher and E1 can be any lower. You understand? It can be 5, it can be 1, it can be 6, it can be 1, it can be 7, it can be 3. Yes, sir. अगर done, अगर help Yes, me, sir. अगर प्लस माइनस में कोई गलती हुई, प्लीज ऑल आइज ऑन द बोर्ड. राइट अनन्या? चेक करता रहे गुड़िया. माइनस आर एच जेड स्क्वायर बाय N2 स्क्वायर. ठीक है अनन्या? Yes. ये माइनस ये वाला है Yes, बेटे, sir. ये माइनस है. एवरीबॉडी प्लीज चेकिंग करते रहना. माइनस आर एच जेड स्क्वायर N1 स्क्वायर. हो गया? Yes, sir. तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया बेटा. Yes, sir. ठीक है ना? तो इसका मतलब आर एच को कॉमन निकाल लो दोस्तों, जेड स्क्वायर Yes. को कॉमन निकाल लो, N1 स्क्वायर चलेगा, माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर चलेगा. सर उल्टा नहीं लिख दिया? नहीं, अब ये पॉजिटिव हो गया ना. नहीं, अच्छा वो नहीं, आपने पहले. हाँ, इसको आगे कर दिया ना, इसको पॉजिटिव कर दिया. Yes, Shall I sir, repeat? You have understood? yes, sir, understood. अनन्या समझ आया भैया? Yes, sir. समझ आ गया. पक्का पक्का मेरे प्यारे से बच्चों, याद तो करना ही नहीं ना. मेरे अपने ढंग है समझाने के, तो इसको जरा संभाल के रखो. सर वो माइनस का साइन नहीं यार, ये प्लस हो गया ना. ये देखना, आर एच जेड स्क्वायर N2 स्क्वायर माइनस प्लस आर एच जेड स्क्वायर N1 स्क्वायर. ये माइनस माइनस प्लस हो गया था ना. सर जो ठीक है? नीचे लिखा हुआ है. नीचे लिखा तो है, ये माइनस ही तो होगा N2 के आगे, ये दोनों ठीक ही तो है. इसमें क्या गलती है? डेल्टा ई ये पीछे चला गया, ये आगे आ गया. N2 के आगे माइनस है और N1 के आगे, इसको खोल के देख, यही तो बनता. बिल्कुल ठीक है. ठीक है. देवांशी दी, हाँ बिल्कुल ठीक है बेटे. सो दिस इज गोइंग टू बी द केस. और सुन, ऐसा कब होगा देवांशी? डॉली, N1 इज गोइंग टू बी हमेशा क्या होगा? स्मॉलर होगा. N2 क्या होगा बेटिया? द लार्जर होगा. राइट देवांशी? राइट इट. वी यूज इट वंस अगेन. ये देखो, यही तो मैंने तुम्हारे से कराया. द चेंज इन एनर्जी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम N1 to N2. देवांशी देख पा रहा बेटा? E2 2 को हायर ले लेना बेटिया, माइनस आर एच जेड स्क्वायर बाय N2. E1 is minus RH Z square by N1 square. Delta E is higher minus lower, and this is pivot. यहाँ पे माइनस और माइनस दोस्त क्या हो जाता है? पॉजिटिव. That is why बेटे मैंने इसको आगे ले गया. So RH Z कॉमन ले लिया, and this is 1 by N1 square minus 1 by N2 square. Do you understand? Yes, sir. Right? अभी एक सेकेंड आगे. एक मुझे एक्सप्रेशन बनाओ, अपनी कॉपी पे लिखो. द डेल्टा ई, आंसर में नहीं जाना, सिर्फ एक्सप्रेशन बनाना. इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम N3 to N7, प्लीज राइट इन योर नोटबुक. गायकी लिख दो. देवांशी, मैं यहाँ कुछ लिखूंगा, आप सिर्फ Yes, sir. वेरीफाई. पहले अपनी कॉपी पे लिखो बेटे, जो आपने ऊपर लिखा हुआ था ना पिछले पेज के ऊपर. आई जस्ट वांट उसमें वैल्यूज डालो. अब लिख लिया. अब मैं लिखूंगा Yes, sir. कंपेयर करना. आर एच जेड स्क्वायर 1 बाय व्हाट, 3 से 7 पे लेके जा रहा था ना मैं, तो दिस इज गोइंग टू बी 3 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 7 का स्क्वायर. दैट्स इट. जस्ट लीव इट हियर. वैल्यूज अभी बाद में पुट करवाऊंगा.
Is it the relationship you have written? Yes, sir. Right. देवांशी मेरे से बात कर बेटे. Yes, sir. देवांशी डॉली 2 केस हो सकते हैं. मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया. चल लिख दिया तो क्या हो गया? If electron goes from n3 to n7, then delta E will be what? Lower. Absorbed. समझा? Yes, sir. न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही होगी बेटे. And if electron jumps from 7 to 3, वैल्यू इतनी आएगी. डेल्टा E बोलो. Will be emitted. Yes. Do you understand my son? Yes, sir. Shall we move ahead गुड़िया? समझ पा रहा है? हाँ जी सर. गुड. चल देवांशी एक बस ये आज की लास्ट चीज करेंगे, ठीक? क्योंकि बोहर थ्योरी तो अभी समय लेगी बेटा. आयनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ, जो कुछ भी मैंने अपने हाथ से लिखा है ना वो आपने कॉपी करना है सर. इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. देवांशी हमेशा सबसे बाहर वाला, दैट इज मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, from an isolated gaseous atom. डॉली देवांशी पढ़ के बता आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन गुड़िया. It is the amount of energy required to remove the outermost electron, most loosely bound electron from an isolated gaseous atom. The way you will be moving ahead na, you will be told that why it will be gaseous atom. अभी थोड़े समय में बताऊंगा, ठीक बेटिया. इमेजिन करिए स्केच. दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द इलेक्ट्रॉन is present in one, let it be hydrogen atom, it can be anything else. Now whatever is the amount of energy we need to supply so that electron is removed from an atom. और रिमूवल के लिए आप उसको कहां पे लेके जाएंगे? इंफिनिटी पे, राइट सर? एंड व्हाट विल बी द डेल्टा E? E higher minus E lower. Do you understand this relationship? And you remember E infinity को हमने क्या बोला था? 0 minus E lower. So E lower का आपका एक्सप्रेशन कितना आया था डियर? Z square by n square. Again minus minus is going to cancel. What will be the expression you will be left with? The delta E is equal to RH Z square by n square. Please copy this relationship. Just copy it. Have we done? Yes, Devanshi, हो गया? Yes, sir. Due to certain reason that I want we should go in sequence, I'm not taking you further today, right? We will be stopping here. The Bohr theory is not our. We will be doing tomorrow radius, day after tomorrow velocity, wavelength, and I will be giving you certain relationships. Then we will be moving further spectrum of hydrogen atom, right? That will be all based upon this, and we will be telling you बोहर को खूब बढ़ाएंगे, उसके बाद बोहर सर को भी फेल किया जाएगा, right? So इनको भी फेल किया जाएगा, and then we will be moving toward failures of Bohr atomic model. But till that stage we have lots of mathematical problems to discuss, right? So I'm not moving further. We are stopping just here. Ionization energy. Enjoy it. Complete your backlog. Leave Bohr theory to me. We will solve it. We will complete it in the next session. Right, my dear friends. तो एक बार जरा इसका रिव्यू हो जाए कि हमने क्या किया था, राइट? हमने यहाँ पे किया कहाँ तक किया था. We started today's session with an important proverb, imagination is more important. So right now सिर्फ आपकी imagination ही अभी चल रही है.
Rutherford said something that the whole positive charge is situated in the nucleus, electron revolve around the circular path. इन्होंने सिर्फ बोला circular path, he did not define कहाँ पे होंगे, और इन्होंने कहा electrons are held together by electrostatic forces. Rutherford sir fail हो गए. He could not explain stability of his model, why an electron does not fall into the nucleus. What happens that it is not going to fall into the nucleus? Rutherford was not able to explain stability. ये आंसर हम कर चुके हैं. इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से न्यूक्लियस में नहीं गिर सकता है, बोहर ने बता दिया था. ये अभी वो बताना शुरू कर गए. He said nothing about distribution of energy of electron. Now you know E1 कितना होगा, E2 कितना होगा, E3 कितना होगा, E4 कितना होगा. आपको पता है electron will be present in that certain fixed path or region that is known as orbit. He could not explain the emission spectrum of hydrogen atom. We are going to explain it very soon. Bohr's theory was started. Main points were most of the space in an atom is going to be empty. Purana wala. Nucleus lies in the center of an atom, proton and neutron. Purane wala. This is a new concept. Electron revolve around the nucleus in fixed circular paths called orbits. Who brought the concept known as orbit? Bohr. Why only fixed? What is the criteria? भाई कौन से ऑर्बिट में क्या खास बात होगी? बोहर बताते हैं ओनली वही ऑर्बिट आर गोइंग टू बी परमिटेड जहां पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बच्चों? h/2 पाई का होल नंबर मल्टीपल होगा. एंगुलर मोमेंटम कैन बी 0, नेवर एवर be 0. Can be 1.1? No. Can be 2.2 into h/2 pi? No. If it happen, it has to be whole number multiples of that. We discussed certain concepts based upon the Bohr. ये तो सिर्फ explanation था, ठीक? And we said that orbitals will be equidistant. Equidistant मतलब उनका जो फासला होगा बराबर होगा in terms of angular momentum. The angular momentum difference between any two orbit is going to be h/2 pi only. And it will be increasing in packets of h/2 pi. एक पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट, 4, 5, 6 on so on. ऐसा बोहर सर बताते हैं. And he said that energy of an electron is stationary fixed. I repeat, energy is fixed. Electron is not fixed. Electron is moving. इसका मतलब क्या था? Electron will not lose or gain energy unless and until it jumps from a particular orbit. Now you know, दूर जाएगा, energy बढ़ेगी, नजदीक आएगा, energy घटेगी, उसी में रहेगा. There will be no effect on the energy. Very important relationships were introduced. Maybe अभी आपसे इनकी दोस्ती नहीं हुई है, but मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से दोस्ती हो जाएगी अगर हम slowly चलेंगे और practice करेंगे. Minus RH Z square by N square, where Z is going to be atomic number Utkarsh and N is going to be Agrim, Bohr orbit. Repeat करना बेटे. 13.6 electron volt per atom, 2.18 into -18. मैंने अग्रिम ऐसे याद किया था. This is -18 ना, ये 2.18 है. अग्रिम ऐसे याद किया था बेटे. 1312 किलोजूल पर मोल. यहाँ पे अनुवंश ने पूछा था कि हमें बताइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है. तो बेटे इस स्लाइड को भी ध्यान देना, हल्का सा अपने उसमें से निकाल लेना. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.602 into -19 जूल के बराबर होता है बेटा. Units of energy can be various units that were discussed. Remember, an atom can have infinite shells. N can be 1, 2, 3, 4 से infinity पे जा सकता है, right? There is no restriction on this. What is a ground state? Ground state is the minimum energy state को हम क्या बोलते हैं? The ground state. As you move away from the nucleus, energy is going to always increase. Nucleus से दूर जाओगे, energy की requirement होगी. Nucleus के तरफ आओगे, energy will be decreasing. Now we calculated electronic energy of different orbits के अंदर electron की. This is per mole वाली energy हमने निकाली थी और हमने एक important observation देखी थी. As we move away from the nucleus, electronic energy is decreasing. Orbits are coming closer and closer to each other in terms of energy.
right? This was the difference. We maximum होगा, lesser होगा, even lesser होगा, and as you move away it will be further decreasing होगा. ये भी समझाना था. Orbits are coming closer. Lyman Balmer Paschen अगली क्लास में आएगा. तो that was taught to you whenever there is going to be attraction between any two bodies, any two objects, any two particles, the energy is always going to be released and loss of energy को negative लिया जाता है. जब भी कहीं पे repulsions होगी, energy will be absorbed, it will be taken as positive. Electronic energy at infinite distance from the nucleus is taken as zero. हमने ये फिक्स किया था हम सबके ऊपर. Everybody clear? Energy will be absorbed and everybody clear? The energy will be released. You move closer and closer or away from the nucleus. N is equal to 1 is the unique orbit that from there energy can only be absorbed. Because if an electron loses energy from n is equal to 1, it would have fallen into the nucleus and its angular momentum will become 0. That is not defined. That means the minimum energy an electron can have is going to be minus 3.6 electron volt per atom z square by n square. You wrote an important expression, change in energy when electron jumps from one orbit to another. Write it 2-3 times before the next class happens. You worked out the ionization energy. It is going to be RH z square by n square because infinity पे energy हम क्या लेंगे? 0. What is ionization energy? It is the amount of energy required to remove the outermost electron from the isolated gaseous atom. That's where we stop. So we will complete it. We will try it in the next section. आगे हम चलने वाले, right? तो वैसे ही तो अनुवंश देवांशी कपूर, did you find the difference between last session and this session? The level has changed, right? Yes, थोड़ा सा फर्क पड़ा क्या नहीं पड़ा? Yes, sir. एकदम जंप आएगा, बट अगले सेशन में ये और इजी हो जाएगा बेटा. चलो my dear friends, we stop here and it will be continued in the next section. Bye, Right, sir. बच्चों? Thank you, sir. Bye, sir. आज नन्या का कोई Thank you, क्वेश्चन? sir. Thank you, sir. Yes, sir. आज नन्या का कोई क्वेश्चन ही नहीं आया. अब ये क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा कैसे क्यों? मेरे को आदत पड़ गई है ना थोड़ी सी. Bye, sir. Bye, darling. Signing off, बच्चों. Bye.